Hello students, I hope that you have seen previous 3 videos on the topic wave theory of light. But what I have seen that some students, many of students are doing really seriously, but some students are not following the instructions. Okay, so I recommend you that whenever you will watch the video, please follow these steps. Okay, first step is when you watch video on that particular topic, for example wave theory of light ka first lecture when you watch, okay, only watching won't help you. While watching the video, you must make your notes. Whatever important points are being highlighted, please make your own notes with it. Okay, so first step, while watching video, you should make notes, your handwritten notes. After that, after the lecture is over and notes are made, also read the textbook which already I have sent it on the group, or you might find previous year textbook में this topic. You can read from textbook the same content that is been covered in the video. For example, first video में अगर cover किया है Newton's corpuscular theory, Huygens theory, Huygens principle. So वो तीनों points you have to read from textbook, और notes में जितना कुछ लिखा है और textbook में अगर कुछ extra content, informative content if you find, you can add it in your notes. Okay, as well as before watching the second video, second lecture watch करने से पहले you can read the further part as well, which will surely help you to understand the second lecture का content. Okay, so after reading the textbook, solve the assignment sheets that have been provided. Okay, solve the assignment questions, solve the assignment sheet, and after that ask doubts. If you have any doubt, you can comment it in the below the video itself, or else you can also send the doubt on the WhatsApp group that we have. And after that we will repeat it for each and every video, first lecture, second lecture, third lecture, और उसके बाद अभी numericals. Today's lecture will be basically solving numericals. So numericals, completing this topic, आज के lecture में ये topic खत्म हो जाएगा. उसके बाद if you have done all these things, you can revise it very well, and after revision you can test your preparation. What we can do is we will arrange a test which you have to give on your own. Okay, you can set the time will be given to you. 1 hour का test होगा, for example. You have to solve that test and you have to check it on your own. Answers will be displayed. For example, after this topic is complete, I will plan a test on this particular topic and I will send the test on the group. Okay, test होने के बाद I will send the solution sheet as well. You will check on your own and you can evaluate your preparation in this process. So this is how it is expected you will prepare each and every lesson. Now since we know that 21 day का already lockdown है, and after that schools and colleges and class will be the last thing that will get started, because बंद पहले क्या हुआ है, schools, colleges and class ही first close हुआ है. So even start भी वही last में होने वाला है. So it might go up to 1 month or maybe more than 1 month. So इतने time period में we cannot lose time. Already 12th standard का preparation start करना चाहिए इस time पे. Even though 11th, most of the students think that 11th अभी तक exam ही नहीं हुआ है. So why should we start 12th? Remember one thing, 11th का एग्जाम will only be nominal now. Okay, उस पर ज़्यादा कुछ फोकस करो मत. Straight away start preparing your 12th standard syllabus. और अप्रैल मई तक अगर क्लास नहीं स्टार्ट होता है, अप्रैल एंड तक क्लास नहीं स्टार्ट होता है, उस केस में यू मस्ट कंप्लीट एटलीस्ट टू लेसन्स टू 3 लेसन्स पर टॉपिक. फिजिक्स पर सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के 2 लेसन कंप्लीट होने चाहिए. सो मेक small targets, achieve those small targets, you will obviously achieve large things in a long run. Okay, so don't waste time, solve at least prepare at least 1 or 2 lectures every day. That will be enough to complete your syllabus on time. Remember, ये कोरोना वायरस जो है, it will take time and you cannot lose time right now, because even though अभी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करते हैं, लोड बाद में आने वाला है. बिकॉज अगले साल का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, वो बोर्ड एग्ज़ाम फेब मार्च में होगा, लेकिन उसके लिए फिर टाइम कम रहेगा. दिस इज़ द फर्स्ट ईयर, सिलेबस चेंज हुआ है, सो वी कैन नॉट लूज मोर टाइम. वी शुड बी अहेड ऑफ एवरी वन एल्स. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो, make the notes, read textbook, solve sheets that is provided in WhatsApp group, ask doubts if you have any, and then prepare yourself, revise everything again and prepare yourself for the test. Okay, so now we will start with the numericals. आज के lecture में I'm going to do 3 things. First, I will solve numericals that I have given in assignment sheets. उसमें से कुछ students ने डाउट्स पूछे हैं. I will only solve those doubts today.
आफ्टर दैट असाइनमेंट शीट वी विल स्विच टू द टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स. अभी तक 12th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सो वी विल सॉल्व फ्रॉम प्रीवियस ईयर टेक्स्ट बुक. After textbook, we will also solve questions which are asked in previous 2-3 years का MHTCET exam. So you will get a clear idea कि what level of question you can expect for CET exam. So this is how today's lecture will be. Let us start with numericals on assignment sheet. Okay, so the first doubt question was the third question from the sheet, and the question is refractive index of water for red color and violet color are given. Now refractive index color पे भी depend करता है, basically wavelength पे depend करता है. Find the difference between speed of rays of two colors in water. Okay, water में when these two rays will enter, what is the difference in their speed? For example, this is water, and if white light is incident on water, let us say it will split. Suppose if two colors are incident on water, first is red color. I will draw red color over here, and this is blue color. This is blue or violet color, and this color is red color. Okay, red color and violet color water में enter करने के बाद what is the difference between their speeds? Now first you must know what is the relation between refractive index and speed. The relation between refractive index and speed is in this way. Refractive index of water with respect to air means absolute refractive index. इसका वैल्यू क्या होता है? स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन वाटर. लेकिन स्पीड इन एयर तो फिक्स है 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड इन वाटर यू कैन कैलकुलेट इफ यू नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. करेक्ट. सो दो कलर्स है यहाँ पे. फर्स्ट कलर इज रेड कलर. सो रेड कलर के लिए टेल मी, रेड कलर के लिए व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन? इट इज गिवन 1.325 विल बी इक्वल टू स्पीड इन एयर कितना है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. करेक्ट. Divided by what is speed in water of red color? We don't know. Red color का speed in water we don't know, that we can find. So कितना आएगा speed in water? Speed in water क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो speed in water for red color is equal to 3 × 10⁸ अपॉन 1.325 मीटर्स पर सेकेंड. ये स्पीड रेड कलर का है. दिस इज रेड कलर का स्पीड. सिमिलरली वॉयलेट कलर का स्पीड कैसे निकालेंगे? वॉयलेट कलर का स्पीड can be calculated as speed in water for violet color. This is red color, this is violet color. कितना आएगा violet color का? This is red color का speed, this speed is violet color का speed will be 3 × 10⁸ once again divided by refractive index of violet से divide करना पड़ेगा 334 meters per second. This will be violet color का refractive index. Can you tell me which speed will be more? Which speed will be more? The answer is रेड कलर का स्पीड विल बी मोर. ऑब्जर्व करो न्यूमरेटर दोनों का सेम है, लेकिन रेड का डिनोमिनेटर छोटा है ना. सो इफ डिनोमिनेटर इज स्मॉल द नंबर बिकम्स लार्ज. सो रेड का स्पीड कभी भी ज्यादा होता है, रेड लेस रिफ्रैक्ट होता है. सो रेड का स्पीड इज मोर, वॉयलेट का स्पीड इज लेस. सो डिफरेंस पूछते वक्त इफ डिफरेंस इज आस्क्ड, डिफरेंस उनके स्पीड में कितना है, आई विल ऑब्वियसली टेक रेड कलर का स्पीड माइनस वॉयलेट कलर का स्पीड. एंड 3 × 10⁸ upon 1.325 minus 3 × 10⁸ upon 1.334. You have to solve this to get the answer. Okay, इसके बाद only solving is there. If you want, you can take 3 × 10⁸ common and further you can solve it. So this is how you will solve question number 3. Okay, I won't solve it decimal तक. You can do it using log tables or using calculators. But अगर board exam है, you will obviously use log table. अगर CET एग्जाम है you will go approximately. Okay, so this is how you will solve question number 3. Okay, so the second doubt is the 8th question from the assignment sheet. Just have a look at the question. Even though अगर solve नहीं किया है ये question, you can see how to solve this question. Determine the change in wavelength of light as it passes from air to glass. Now when the light is passing from air to glass, what is the change in wavelength? For this, what you must know first thing is whenever light is traveling from one medium, let us take air, and it enters second medium, थ्री क्वांटिटीज लाइट के पास होती है. थ्री क्वांटिटीज, एक होती है स्पीड जिसको अपन c बोलते हैं, एक होती है वेवलेंथ फॉर विच वी डिनोटेड बाय लैम्बडा, और तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी जिसको डिनोट करते हैं f या समटाइम्स न्यू यूज करते हैं. करेक्ट.
ये तीनों चीज स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, लेट अस कॉल इट एज 1 1 1 बिकॉज वो फर्स्ट मीडियम में है. When the light will go in second medium, उसका speed will become let us say c2, lambda 2 and frequency f2 ऐसे है for example. तो this is very very important that you must remember. Whenever light is entering from one medium to other medium, speed is going to change, wavelength is going to change, but frequency will never change. f1 f2 लिखने की ज़रूरत नहीं है. You can write just f and f. Frequency never changes. What changes is speed and wavelength. फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम. एंड स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ में रिलेशन क्या होता है? c इज इक्वल टू एफ लैम्बडा. सो अगर c1 है फर्स्ट मीडियम है तो लैम्बडा 1 है फर्स्ट मीडियम का वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी f है. ये जब सेकेंड मीडियम में जाएंगे तो सेकेंड मीडियम का स्पीड c2 विल बी f लैम्बडा 2. नो नीड टू राइट f1 f2, फ्रीक्वेंसी सेम होती है दोनों मीडियम में. एंड देयरफॉर स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का रेशियो c1 बाई c2 इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्बडा 1 बाई लैम्बडा 2 बिकॉज एफ कैंसिल हो जाएंगे, सेम है इसलिए. सो दिस फॉर्मूला नॉर्मली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यूज करते हैं अपन म्यू 2 1 का, c1 बाई c2 लैम्बडा 1 बाई लैम्बडा 2 ऐसे फॉर्मूला है वो. करेक्ट. सो नाउ इफ यू नो दिस फॉर्मूला, द क्वेश्चन इज इन दिस वे, डिटरमाइन चेंज इन वेवलेंथ. लैम्बडा 1 का लैम्बडा 2 जब हुआ तो चेंज कितना हुआ? इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ऑल्सो गिवन. नाउ कैन यू टेल मी ये फ्रीक्वेंसी कौन से मीडियम में दी है? यहाँ पे तो लिखा नहीं है कि इन एयर है या ग्लास है, लिखने की भी जरूरत नहीं है. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज गिवन, इट इज सेम एवरीवेयर, सो दिस इज सेम एवरीवेयर. ऑल्सो फाइंड द वेव नंबर इन ग्लास. ये क्वेश्चन बाद में सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वी विल सॉल्व द फर्स्ट पार्ट. करेक्ट. सो एयर में जब लाइट है तभी उसका स्पीड कितना है? 3 इंटू 10⁸. उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? एयर में भी फ्रीक्वेंसी उतना है, ग्लास में भी फ्रीक्वेंसी उतना है, 4 इंटू 10⁻10. सो उसका वेवलेंथ कितना होगा? आई कैन सॉल्व स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. आई विल गेट वेवलेंथ एज स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी. 3 इंटू 10⁸ स्पीड है अपॉन फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10⁻10 है. ओके, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है क्वेश्चन में, दिस शुड बी 10⁻14 हर्ट्स. ये 14 हर्ट्स होना चाहिए तो ही ये सॉल्व होगा. 10⁻14 हर्ट्स अगर ये होगा तो ऊपर जाके क्या बनेगा? 10⁻⁻6. करेक्ट. 10⁻8 एंड 10⁻14 विल बिकम 10⁻⁻6. सो 3/4 कितना है? 0.75. सॉल्विंग दिस, ये इसको अगर एंगस्ट्रॉम यूनिट में कन्वर्ट करना है, एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो 10⁻10 लगेगा. सो आई नीड टू राइट इट एज 7500. देखो 1 2 3 4 शिफ्ट किया इंटू 10⁻10 को आई कैन राइट एंगस्ट्रॉम यूनिट. सो इतना वेवलेंथ है लाइट का एयर में. करेक्ट. एयर में इतना वेवलेंथ है. अब ग्लास में जाने के बाद इट्स स्पीड विल चेंज, c1 विल बिकम c2 एंड लैम्बडा 1 विल बिकम लैम्बडा 2. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीड, वी आर इंटरेस्टेड इन वेवलेंथ. सो आई विल डायरेक्टली यूज दिस रिलेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन विथ वेवलेंथ. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेवलेंथ इन फर्स्ट अपॉन वेवलेंथ इन सेकेंड. यहाँ पे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन? इट इज गिवन 1.5 इज लैम्बडा 1. वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम कितना है? 7500 एंगस्ट्रॉम यूनिट अपॉन लैम्बडा 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यू विल गेट लैम्बडा 2 एज 7500 अपॉन 1.5, दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट. सो अगर एयर में वेवलेंथ 7500 है, ग्लास में वेवलेंथ 5000 है, सो चेंज कितना हुआ? Change in wavelength obviously 2500 angstrom unit. This will be the answer for the first part of the question. This is the change in wavelength when it enters from air to glass. Air to glass enter करने के बाद इतना wavelength change हुआ है. Also find wave number in glass. Now see, wave number का definition क्या है? Lambda bar उसका notation है and wave number is written as 1 by lambda. Okay. In some books even nu bar is used. This is wave number का notation 1 by lambda. ये wave number air में पूछा है या glass में पूछा है? Wave number is asked in glass. तो in glass wavelength पता होना चाहिए. What is wavelength in glass? We have calculated. ये तो air वाला wavelength है, ये glass वाला wavelength है. ये difference है, ये तो difference है. glass का wavelength ये था, glass में wavelength कितना था? 5000 angstrom unit. So 1/5000 angstrom unit को meters में convert करेंगे 10⁻10 मीटर. 3 जीरोज अगर कैंसिल करेंगे यहाँ पे
what will happen? 1 upon 5 into 10 raised to minus 7. Solving it properly, 10 raised to minus 7 will go up. It will be 10 into 10 raised to 6. 10 raised to 7 upar, I can write it in this way, upon 5. So the answer is 2 into 10 raised to 6. यूनिट ऑफ वेव नंबर क्या होना चाहिए? 1 अपॉन मीटर. सो इसको पर मीटर बोलते हैं. दिस इज द आंसर फॉर वेव नंबर. This is the answer for change in wavelength. This is how you will solve question number 8. So the next doubt from the assignment sheet is the 9th question, and this 9th question is actually based on polarization. A ray of light through air falls on a glass surface at an angle of incidence I. It is found that reflected and refracted ray are mutually perpendicular. काही आठवतं का याच्यावरून? डू यू रिमेंबर ब्रूस्टर्स लॉ का स्टेटमेंट? इन ब्रूस्टर्स लॉ, दिस इज बेसिकली ब्रूस्टर्स लॉ के ऊपर का क्वेश्चन. रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड 90 डिग्री पे है. व्हाट वाज ब्रूस्टर्स लॉ? वेन एवर लाइट इज इंसिडेंट एट अ पर्टिकुलर एंगल, व्हाट इज दैट एंगल कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग एंगल. When a ray of light is incident at polarizing angle, the reflected light is completely polarized. Correct? ये unpolarized light है. It will completely get polarized. And इस टाइम पे at that angle one more thing occurs. What is that second important thing? That refracted ray and reflected ray are both perpendicular to each other. It is given, it is found that reflected and refracted ray are at 90 degree. मतलब इनडायरेक्टली ऐसे बताया है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये पोलराइजिंग एंगल है. सिंपल. सो अगर ये पोलराइजिंग एंगल है, वी कैन इजीली फाइंड इट. जस्ट फॉर दैट यू मस्ट नो व्हाट इज ब्रूस्टर्स लॉ. एंड ब्रूस्टर्स लॉ का स्टेटमेंट ऐसे है, tan IP is equal to refractive index. This is Brewster's law. We have seen that. Tangent of polarizing angle is equal to refractive index of this medium. इस मीडियम का, ये मीडियम कौन सा है? ये तो ग्लास है. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, बट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन थिंग क्या है? स्पीड इन ग्लास. एंड प्रीवियस क्वेश्चन में ही वी हैव सीन, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है देन इट इज स्पीड इन फर्स्ट मीडियम, मतलब एयर का स्पीड अपॉन स्पीड इन सेकंड मीडियम, दैट इज ग्लास का स्पीड. इसलिए स्पीड दिया है. 3 into 10 raised to 8 is the speed in air. 2 into 10 raised to 8 is the speed in glass. सॉल्व करो, ये आंसर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 which is 1.5 is equal to tan IP पोलराइजिंग एंगल. सो पोलराइजिंग एंगल का आंसर आएगा tan इनवर्स 1.5. ये जो आंसर आएगा फ्रॉम लॉग टेबल यू कैन फाइंड टेंजेंट, नेचुरल टेंजेंट्स में यू विल गेट द वैल्यू. रफली देखो कितना जाएगा ये. रफली tan इनवर्स √3 कितना होता है? tan इनवर्स √3 60 डिग्री होता है ना. tan 60 इज √3. सो √3 का वैल्यू 1.73 होता है. सो tan इनवर्स 1.73 60 डिग्री है. tan इनवर्स 1 कितना है? 1 45 डिग्री. tan ऑफ 45 1 होता है. अगर tan ऑफ 45 1 है, tan ऑफ 60 1.73 है, तो इन दोनों के बीच में कहीं तो है ये 1.5. सो ये इन दोनों के बीच में आंसर आता है. नॉर्मली द आंसर कम्स आउट 57 डिग्री कुछ तो जाता है आंसर रफली. ओके, सो स्टिल यू कैन वेरीफाई इट वंस कि पोलराइजिंग एंगल का आंसर क्या आता है. यू कैन चेक इट इन लॉग टेबल्स, राइट. सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. ओके, सो द नेक्स्ट डाउट एंड द लास्ट डाउट फ्रॉम द असाइनमेंट शीट इज द 13th क्वेश्चन. मीन्स एक्चुअली 12 क्वेश्चन के बाद जो 13th क्वेश्चन जो है, इट इज फर्स्ट क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 2, वो क्वेश्चन है. एंड द क्वेश्चन इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60. फाइंड द रेशियो ऑफ विड्थ इन ग्लास टू एयर. फॉर दिस आई हैव गिवन यू वन फॉर्मूला cos I by cos R. बट रिमेंबर दिस थिंग, कैसे डिराइव किया है वो फॉर्मूला देखो. व्हेन अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट, पे अटेंशन, दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट. रेड कलर का वेव फ्रंट है ये. दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट. ओके, ये प्लेन वेव फ्रंट एंगल 90 डिग्री पे होता है. ये प्लेन वेव फ्रंट रे को 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू रे होता है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रे. करेक्ट. वेयर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो ऑब्वियसली दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस. करेक्ट. एंड रेड कलर का वेव फ्रंट है. आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट एंटर सेकेंड मीडियम, द विड्थ जनरली इंक्रीज होता है. डेंसर मीडियम में जाने के बाद विड्थ इंक्रीज होता है. सो उसका विड्थ विल इंक्रीज, मीन्स दिस ब्लू कलर वेव फ्रंट विल बी द वेव फ्रंट इन सेकेंड मीडियम. ये 90 होगा. करेक्ट, परपेंडिकुलर. एंड दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस R. बाय ज्योमेट्री दिस विल ऑल्सो बी R.
इफ द क्वेश्चन इज विड्थ इन एयर अपॉन विड्थ इन ग्लास, ऐसे क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल एयर का विड्थ दैट इज रेड कलर का लाइन अपॉन ग्लास का विड्थ दैट इज ब्लू कलर का लाइन. इसका आंसर क्या आएगा? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नेम इट ए बी सी डी. सो बेसिकली विड्थ इन एयर मतलब ए बी अपॉन विड्थ इन ग्लास मतलब सी डी. ए बी अपॉन सी डी पूछा है. इफ आई मेक सम स्मॉल एडजस्टमेंट, इफ आई डिवाइड न्यूमरेटर बाय बी सी एंड डिनोमिनेटर बाय बी सी, केयरफुली ऑब्जर्वेशन विल टेल यू दैट न्यूमरेटर जो बना है अभी ए बी अपॉन बी सी, वो क्या है? ए बी अपॉन बी सी बेसिकली इस ऊपर वाले ट्राइंगल का कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कॉस आई है, कॉस आई. वैसे ही डिनोमिनेटर में इट इज कॉस आर. ये ट्राइंगल में व्हाट इज सी डी अपॉन बी सी? सी डी अपॉन बी सी इज कॉस आर. देयरफॉर आई हैव गिवन यू दिस फॉर्मूला, विड्थ इन एयर अपॉन विड्थ इन ग्लास ऐसे लर्न करने से अच्छा विड्थ इन फर्स्ट मीडियम अपॉन विड्थ इन सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल इन फर्स्ट मीडियम अपॉन कॉस ऑफ एंगल इन सेकेंड मीडियम. करेक्ट. इस क्वेश्चन में विड्थ कौन सा पूछा है? विड्थ इन ग्लास टू विड्थ इन एयर. ग्लास टू एयर पूछा है. सो ऑब्वियसली अगर ग्लास टू एयर पूछा है, यू विल गो विथ व्हाट? यू विल यूज फॉर्मूला cos r अपॉन cos i. ऑब्वियसली यू विल यूज cos r अपॉन cos i. इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन 60 डिग्री, मतलब डिनोमिनेटर का काम हो गया cos 60, यू नो इट इज हाफ. प्रॉब्लम इज r. रिफ्रैक्शन एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन, बिकॉज स्नेल्स लॉ यूज करके यहां पे सॉल्व करूंगा मैं. साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू म्यू. दिस विल गिव यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. चेक करो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको. इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ साइन आई, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? वो 60 डिग्री है. साइन 60 कितना होगा? √3/2 डिवाइडेड बाय साइन आर विच वी डोंट नो. साइन आर विच वी डोंट नो इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.5, विच आई विल प्रेफर टू राइट इट एज 3/2. 1.5 3/2 ना. 2 गया. √3 अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 3/1 एंड साइन आर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद साइन आर इज इक्वल टू 3 विल गो डाउन. √3/3 इज इक्वल टू 1/√3. करेक्ट. √3/3 इज 1/√3. ये तो मिला साइन आर. कैसे निकालेंगे कॉस आर? ये साइन आर मिला है जो स्टैंडर्ड भी नहीं है, किसका एंगल पता चलेगा? अगर ये 1/2 होता था आई वुड से 30 डिग्री है. ये दिस इज समथिंग एल्स. So I would not convert this. What I will do is I will directly try to convert sin r into cos r. So how to convert sin r into cos r? There are two methods. First method is draw a triangle. I will give you both the methods. See, first method is, which I will prefer, is I will show you कि how to convert it using a triangle. ये triangle draw कर लो एक. अगर ये r है तो sin r का definition क्या है? Opposite side जो 1 होगा, opposite side 1 होगा, अपॉन हाइपोटेनियस जो √3 है. 1/√3 इज साइन आर. सो इस ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री है तो ये साइड कितना बनेगा? पाइथागोरस थ्योरम से दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. एक्स क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू √2. सो ये मिल गया √2. ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया. नाउ यू कैन फाइंड वॉट एवर यू वॉन्ट. साइन आर मिला है, यू कैन फाइंड कॉस आर, टैन आर, कॉट आर, एनीथिंग. व्हाट इज रिक्वायर्ड? कॉस आर इज रिक्वायर्ड. कॉस आर कितना आएगा इस ट्राइंगल से? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस आर. साइन आर से कॉस आर कैसे कैलकुलेट किया? कॉस आर √2/√3 बाय यूजिंग ट्राइंगल वाला मेथड. सिमिलरली और एक मेथड जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वी कॉल इट एज, वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर शुड बी 1. करेक्ट. ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है. साइन स्क्वायर आर 1/3, √3 का स्क्वायर है मतलब वो 1/3 है, प्लस कॉस स्क्वायर आर इज 1. सो कॉस स्क्वायर आर विल बी 1 माइनस 1/3 ना. ये 1/3 उधर जाएगा विच इज 2/3 एंड टेकिंग स्क्वायर रूट्स इट विल बी रूट ऑफ 2/3 विच इज √2/√3. So substituting that value over here क्या मिलेगा? √2/√3 cos r upon cos i. What is cos i? Angle of incidence तो 60 डिग्री है. Cos 60 is half. So answer will be 2 will go up. 2 √2 upon √3 is the answer for the width
in glass to air. This is how we solve question number 13 from the assignment sheet. And now since we have completed assignment sheet wala part, now we will move to solving questions from previous year textbook. Okay, this year syllabus has changed, textbook is not available yet, so we will solve questions from previous year textbook from the topic wave theory of light. Okay, so questions from textbook. Now the questions from textbook which were in the previous year textbook, most of the questions were actually also mentioned in the assignment sheet. So assignment sheet में majorly all the questions are already covered, but few questions are not covered in the assignments, and those questions are slightly difficult. So those questions which are not covered in the assignment sheet and are in the textbook, we will solve those questions. जैसे कि ये question है, first question. Now read the question carefully. If you want, you can pause the video and read this question, and when you will come back, when you will switch resume the video, tell me what is angle of incidence in this particular question. Okay, so we will solve this question now. The width of a plane wavefront is found to be doubled in a denser medium. Width is found to be doubled in denser medium. मतलब ये लाइट है, दिस इज द विड्थ, रेड कलर विड्थ इज इन एयर, लेट अस से एयर में विड्थ है, एंड व्हेन इट एंटर्स ग्लास और इट एंटर्स अनदर मीडियम विच इज डेंसर मीडियम, उसका विड्थ जो है ये ओरिजिनल से ट्वाइस हो गया, डबल्ड, इट इज डबल्ड. इफ इट मेक्स एंगल 70 डिग्री विथ सरफेस, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. Okay, so tell me what is angle of incidence in this question. Angle of incidence कितना है? 20 डिग्री है और 70 डिग्री है. What do you think? कितना है? 20 है या 70 है? Okay, so जिनका आंसर 20 डिग्री है, that is wrong. The correct answer is 70 डिग्री. इसमें स्लाइट छोटा सा ट्रिक है, देखो. Why answer is 70? Most of the students सरफेस देख के ही आंसर 20 डिग्री बोलते थे, बिकॉज सरफेस के साथ एंगल है, मतलब विथ नॉर्मल 20 डिग्री हो जाएगा, सो आंसर शुड बी 20, एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 होना चाहिए, बट इट इज नॉट इन दैट वे. केयरफुली ऑब्जर्वेशन अगर देखेंगे तो व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय द रे ऑफ लाइट. रे का एंगल विथ द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सरफेस के साथ ग्लांसिंग एंगल होता है. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे का नॉर्मल के साथ का एंगल है. जैसे इस फिगर में अगर ये रे ऑफ लाइट है, इट विल मेक एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विद द नॉर्मल. बट वेवफ्रंट का स्लाइटली डिफरेंट होता है. अगर वेवफ्रंट के साथ अगर पूछा व्हाट इज वेवफ्रंट का एंगल मेड विद द सरफेस और व्हाट इज द वेवफ्रंट का एंगल मेड विद द नॉर्मल, वेवफ्रंट विल नॉट मेक एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल. वेवफ्रंट विल मेक angle with the surface and that will be angle of incidence. So अगर ray of light is making, suppose ray of light is making 50 degree with the normal, ray of light 50 डिग्री नॉर्मल के साथ है, yes this is angle of incidence. लेकिन अगर wavefront is making 50 degree with, sorry, wavefront is making 50 degree with surface, then still that is angle of incidence. मतलब wavefront का surface के साथ angle of incidence होता है और रे का नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है. दिस इज क्लियरली प्रूव्ड इन द फिगर. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रे का है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अभी बाय ज्योमेट्री वी हैव प्रूव्ड इन द डेरिवेशन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस. और इस क्वेश्चन में विड्थ ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट इज फाउंड टू बी डबल्ड इन डेंसर मीडियम इफ इट, फोकस ऑन दिस थिंग, इफ इट मतलब क्या? इट मीन्स प्रीवियस स्टेटमेंट में जिसको रेफरेंस लिया है, इट मेक्स, if it मतलब wavefront makes angle 70 degree with surface, then calculate. So wavefront is making 70 degree with the surface, मतलब itself it is angle of incidence, so answer is 70 degree, not 20, correct? So angle of incidence मिल गया है 70 degree. Now it is easy to find refractive index of medium because we know the formula of width का ratio. Tell me what is width in air upon width in glass? Already I have told you the formula. एयर में है तो सॉरी cos of 70 डिग्री, cos of 70 डिग्री, बिकॉज जिस मीडियम में पूछा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन cos r, करेक्ट. वी डोंट नो व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वी डोंट नो. सो इट इज गिवन दैट कि ग्लास से
एयर से ग्लास में जाते वक्त द विड्थ बिकम्स डबल. सो लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन, 1/2 है वो. So 1/2 is cos 70 upon cos r. This will give you cos r is equal to 2 cos 70. If you solve it properly, cos 70 का value, if you observe in the natural cosine table and put the value, you will get cos r equal to इसका 2 into इसका आंसर आएगा 0.34. So it comes out to be 0.68. So somewhere close to answer will be close to 46 degree. कुछ तो आंसर आ जाएगा 46 degree roughly. And therefore once you get cos of 46 once you get r is equal to 46, refractive index is asked, which is simply sin I upon sin r. Angle of incidence तो already दिया है, sin 70 degree upon sin 46 degree. और ये solve करने के बाद the answer that you will get will be समथिंग, देखो cos 70 कितना आएगा, cos 60 √3/2 होता है, उससे भी आगे जाएगा आंसर. √3/2 का वैल्यू होता है 0.866. ये cos 60 है, cos 70 के वैल्यू और ऊपर जाएंगे, मे बी 0.9 के पास जाएगा वो. एंड cos ऑफ 46 डिग्री, cos 45 के सॉरी साइन ऑफ 46 डिग्री इज क्लोज टू साइन ऑफ 45 डिग्री. सो उसका आंसर 0.7 के पास जाएगा. सो 9/7 एंड दिस इज रफली 1/7 and roughly 1.3 के close to answer आएगा. I would suggest you use the log tables for solving all these things. Right now the aim of this particular explanation is to explain the concept. Okay, solving this you can easily do it. So whether it is clear, the main point was angle of incidence determine करना था, because it makes, मतलब wavefront makes angle with surface, which is angle of incidence. Put the value over here, you will get r. From r you will get refractive index. So the answer will be close to 1.3. This is how you will solve the question from the textbook. Okay, so second question from the textbook is, if critical angle of medium is sine inverse of 3/5, find the polarizing angle. So this question is basically based on 11th standard refraction of light formula. That formula we need to use and then solve the question. ये polarizing angle पूछा है. What is the concept of polarizing angle? Brewster's law. And Brewster's law states that polarizing angle का tan is equal to refractive index. We know this formula. और यहाँ पे critical angle दिया है, वो 11th में था. Critical angle का formula क्या था? Refractive index sin inverse of 1/mu was IC. So 1 upon sin IC, this was the formula. 1 upon sin IC is equal to mu. So this is how you can relate. This was in 11th standard. ऐसे formula था, देखो ऐसे नहीं था वो. The formula was in this way. Sin inverse of 1/mu is equal to IC. So sin inverse उधर गया तो it will become sin IC is 1/mu, और फिर reciprocal लेने के बाद you will get this thing. So if I compare both the expressions, tan IP क्या मिलेगा? Tan IP आएगा 1 upon sin IC. Correct? Tan IP will be 1 upon sin IC. But sin critical angle IC कितना दिया है क्वेश्चन में? Critical angle in the question is given sin inverse of 3/5. So sin IC का वैल्यू कितना दिया है? Sin IC का वैल्यू दिया है 3/5, which I can plug over here. So if I put the value 3/5, this will become 5/3. Tan IP is equal to reciprocal उल्टा होने के बाद 5 will go up, right? 5/3, which is equal to 1.67. 1.67 is tan IP. So on solving this, IP will be tan inverse of 1.67. What answer do we expect? See, अगर वो tan inverse √3 होता था, आंसर 60 डिग्री आता था. √3 क्या होता है? 1.73. वो 1.73 से स्लाइटली लेस है. सो वी कैन एक्सपेक्ट आंसर क्लोज टू 60, मे बी 58, 59 डिग्री समथिंग. दिस विल बी द आंसर अप्रॉक्सिमेटली, बट यू कैन यूज नेचुरल टेंजेंट टेबल टू गेट द करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर. दिस इज हाउ वी विल सॉल्व. क्रिटिकल एंगल से पोलराइजिंग एंगल कैसे लाना है? जस्ट कंपेयर टू इक्वेशंस, 11th का एक और 12th का एक, राइट? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so the next question from the textbook, which is not asked in assignment sheet. Such question I am considering only. So the third question is, have a look at the question. It is very simple question. You can solve it. If a glass plate of refractive index is 1.732, now why 1.732 is given? Because it is √3.
correct, is used as a polarizer, what should be polarizing angle and angle of refraction? See, this question is very simple. It is based on Brewster's law. If a glass plate is used as a polarizer, angle should be what? Angle of incidence should be polarizing angle. And according to Brewster's formula, tan IP should be equal to mu, where refractive index for this question is given 1.732, which is root 3. So tell me, tan of which angle is root 3? Tan of 60 degree is root 3. So clearly polarizing angle will be 60 degree. Polarizing angle will be 60 degree. Second question क्या है? Angle of refraction क्या होगा? Now to solve angle of refraction, most of the student will do what? They will go for Snell's law. Sin IP upon sin R is equal to mu. But इससे better method क्या है? The best way of calculating refractive and angle of refraction for this particular problem is knowing that reflected ray and refracted ray are normal. So this is IP and this is R. So R plus 90 plus IP is 180, correct? So 90 will cancel. So what is R? R is simply 90 minus IP, and 90 minus IP is 60. So R will be 30. Angle of refraction will be 30 degree. These are the answers for question number 3. Okay, so these were the questions from textbook. Other questions were already asked in the assignment sheet. So these were the questions which were not asked in the assignment sheets. So now we have covered textbook as well as assignment sheet. Now we will solve questions which were asked in previous MCQ, previous year MHTCET exams. Okay, so we will start with next session, that is solving questions from previous year MHTCET exams. So this is 2016 CET exam question. The question is based on Brewster's law. You can read the question and try to solve it. You can pause the video and try the answer. After that we will discuss it in detail. Okay, so the question is, for Brewster's law, except for polished metal surfaces, the polarizing angle, which of the following statement is correct? Now see, Brewster's law first of all is based for if light is reflected from a refracting surface, not from a reflecting surface. So metal surfaces पे valid नहीं है, वो सिर्फ उधर ही valid है जहाँ पे refracting medium should be present. So if this is a refracting medium and light is incident at polarizing angle, then it will reflect. The refracted light will be completely polarized if this is unpolarized light. This is refracted ray, and angle between reflected and refracted is 90 degree, correct? So the question is, polarizing angle depends on what? Now polarizing angle, what is Brewster's law basically? Tangent of polarizing angle is refractive index. So polarizing angle directly means it depends, basically it depends on tan inverse of refractive index. So polarizing angle depends on refractive index. Now if polarizing angle depends on refractive index also depends on wavelength, and wavelength depends on color of light. Every color ka wavelength is different, correct? So I can comment it in this way, that polarizing angle depends on wavelength, depends on color. So answer क्या आएगा? Brewster's law for polarizing angle depends on wavelength and depends on color, मतलब depends on wavelength and is different for different colors. So answer is A for the question number 1. So polarizing angle will depend on wavelength as well as it will depend on color. So every color ka wavelength is different. So every color ka polarizing angle will be different. Okay, so let's have a look at question number 2. This question is asked in MHTCET 2017 exam. And again the question is based on polarization, that is Brewster's law. So the question is, polarizing angle for a transparent medium is theta, polarizing angle is theta, and v is the speed of light in that medium. Then what is the relation between theta and v? You can pause the video and try this question if you want. So we will discuss this question now. See, polarizing angle is given theta, मतलब polarizing angle we normally denote it as IP, and speed of light in the medium is given. So refractive index and angle of polarization में what is Brewster's law? According to Brewster's law, tan of IP is equal to refractive index of the medium. But definition of refractive index क्या है? It is velocity of light in air upon velocity of light in the medium. So what is the value of tan IP? IP को theta लिखा है यहाँ पे. So tan theta will be C by V. You can observe all questions V by C में है, V by C. C by V में नहीं है. So reciprocal I will take. So
tan का reciprocal is cot, 1 upon tan is cot theta is v by c, so theta will be cot inverse of v by c. So very simple question, answer is beta. Question number 2, answer is B. Okay, so the next question is question number 3, question asked in 2018 CET exam. So the question is, a ray of light is incident normally on a glass slab of thickness 5 centimeters and refractive index 1.6. Okay, the time taken to travel from the source to the slab and travel in the glass slab is same, then the distance of source from the surface is, options are given. You can try this question and then we will solve it. Okay, so how to solve this question? See, this is a glass slab, let us consider, iska thickness is given 5 centimeters, so this distance is 5 centimeters, correct? And from this glass at unknown distance x, the source of light is present which is emitting light. Now clearly this is in air, so ये air medium है, air में light is traveling at the speed of light in air is 3 into 10 raised to 8 meters per second. And once it enters the glass now, उसका speed reduces. उसका speed कितना हो जाएगा? The refractive index का formula is speed in air upon speed in glass. This is the formula of refractive index, correct? So speed in glass will be, what will be the speed in glass? Cross multiply करने के बाद, it will be speed in air 3 into 10 raised to 8 upon refractive index which is 1.6 given. So now the light will travel in this glass slab with the speed of 3 into 10 raised to 8 upon 1.6. इस speed से travel करेगी glass and this is air. ये distance unknown है, ये distance known है. Important point क्या है? This statement is important. The time taken to travel from source to the slab and to travel in glass slab is same. ये time and this time is same. Now speed distance time के formula में speed is equal to distance upon time. So what is the formula of time then? Time का formula कैसे बनेगा? Time will be distance, time will go upon speed. So यहाँ पे जितना time लगेगा वो कितना होगा? Distance, कितना distance है? We don't know that distance, right? X upon speed कितना है? 3 into 10 raised to 8. ये time लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में. एंड यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है? 5 सेंटीमीटर, कीप इट इन सेंटीमीटर, अपॉन स्पीड, कितना स्पीड है? 3 into 10 raised to 8 upon 1.6. So 3 into 10 raised to 8, 3 into 10 raised to 8 will cancel, 1.6 will go up, it will become 5 into 1.6, unit will remain same, centimeters. So ये जो x distance है उसका आंसर आएगा इनका multiplication which is 8 centimeters. So the source should be placed at a distance of 8 centimeters from the glass slab. So question number 3 का answer is beta. You can observe every year CET exam में one question is asked on this topic, wave theory of light. Now we will move to the last, that is CET 2019 exam. 2019 exam का question. Okay, so the next question is CET 2019 exam question. Now CET 2019 exam was conducted online, and online में it was conducted in different sessions, मतलब almost 10 to 11 sessions में वो conduct की हुई exam है. So there are different number of papers. So उसमें से एक कोई तो session का ये पेपर का question है, एक session के पेपर का ये question है, and in every paper there will be one question on wave theory. So this is one question from those 11 sessions. Okay, we don't have papers of all 11 sessions as the papers were not published online. Certain 2-3 ही पेपर मिले हैं, उसमें से एक question ये है, right? See, the question is very simple. It is theory based question. It is based on Doppler's effect concept, Doppler's effect in light. If a star emitting yellow light is accelerated towards Earth, it is coming towards Earth, then observer on Earth will appear, for it, the observer on Earth के लिए it will appear what? First of all, you try the question, pause करो video, try करो answer क्या आता है, then you can check it. See, I'll explain the question now. For observer on Earth, if any source of light is coming towards the observer, then उसका जो frequency है, this person will see frequency greater. इसमें frequency apparent will be greater. उसको frequency increase हुई ऐसे लगेगा, frequency increased frequency. So wavelength decrease detect होगा, wavelength decrease हुई ऐसे लगेगा.
सो वेवलेंथ डिक्रीज हुई मतलब क्या, विबग्योर इन द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, विबग्योर में येलो कलर से कम वेवलेंथ यहाँ पे है, ज़्यादा वेवलेंथ यहाँ पे है राइट साइड में. सो if the source is coming towards earth, that wavelength that is emitted will decrease because frequency will increase. So wavelength decrease मतलब इससे कोई भी कम वाला कलर will be fine in the option. अब ऑप्शन में देखो ऑरेंज राइट साइड में है, so this is not possible. रेड is also on the right side, is also not possible. येलो सेम कलर तो नहीं रहेगा, फ्रीक्वेंसी डॉपलर्स इफेक्ट का मीनिंग ही वही है कि द कलर इज गोइंग टू चेंज एंड ग्रेजुअली चेंजेस टू ब्लू. दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. नाउ इसमें अगर इसमें ब्लू की जगह पे ग्रीन कुड ऑल्सो बी करेक्ट, ग्रीन की जगह पे इंडिगो और वॉयलेट, एनी कलर वुड बी इट वुड वर्क because it is coming towards. So as the source is coming towards earth, the frequency increase will be detected, wavelength decrease will be detected. Can you tell me what this particular term is called as? When the source is coming towards earth, what do we detect? We detect a blue shift, correct? I have explained this in theory. We detect a blue shift and blue shift में wavelength decrease होता है. So यहाँ पे answer, the correct answer is C. Question number 4, answer is C. Okay, so there is one more question from CET 2019 exam. Second, दूसरे कोई तो shift का पेपर है ये, उसमें से ये वेव थियरी ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. यू कैन हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी n, वेवलेंथ लैम्बडा एंड वेलोसिटी v in air enters glass of refractive index mu. Then frequency, wavelength and velocity in glass are what? Which of the following options are correct? So you can try this question first. See, we have already discussed this. When air to glass light enters, correct, स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में अगर स्पीड c1 है, वेवलेंथ लैम्बडा 1 है और फ्रीक्वेंसी n1 है, देन व्हेन दे विल गो इनटू ग्लास, स्पीड c2, वेवलेंथ लैम्बडा 2, फ्रीक्वेंसी n2. तो एयर टू ग्लास व्हेन द लाइट गोज और व्हेनेवर लाइट चेंजेस द मीडियम, स्पीड चेंजेस, wavelength changes but frequency never changes. So frequency यहाँ पे जितना है same frequency will remain in the second medium. So अगर n frequency air में है तो glass में भी frequency will remain n. So frequency, wavelength and velocity में frequency should remain same. So remain same option 1, ये तो option possible ही नहीं है, frequency change हो गई यहाँ पे. Even this is not possible. So these two options में से एक option correct होगा. नाउ क्लियरली स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, यहाँ पे वेवलेंथ चेंज नहीं हुई है. सो दिस शुड ऑल्सो बी द रॉन्ग चॉइस, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. बट नाउ वी विल सी वाई दीज ऑप्शंस लैम्बडा बाई म्यू और वी बाई म्यू कैसे आया. वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, आई विल राइट ओवर हियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इज स्पीड इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड इन मीडियम 2. This is refractive index of 2 with respect to 1. So what will be speed in medium 2? Speed in medium 2 will be speed in medium 1, which is air. Air में speed is v by refractive index. So v by mu. Similarly, refractive index is also defined as lambda 1 by lambda 2. So what will be lambda 2? Refractive index in second medium will be, wavelength in second medium will be wavelength in first medium. First medium का wavelength is lambda upon mu will go down. So this is also correct. Frequency remains same. So the correct choice for this question is option C. So this is how you can solve this question. So we have solved 2016 से 2019 वाले questions and now you have clear idea कि what type of questions are expected in CET exam.